हम करते हैं ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्केच की तरफ आप देखें, लुक एट द स्केच। यहाँ पर देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, जो कुछ हमने अभी पढ़ा है, दिस इज अ समरी ऑफ ऑल दैट, ठीक है। एंड वाटर ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट, ट्रांसपिरेशन पुल है, एंड वाटर लॉस्ट फ्रॉम द लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एंड who is the driving force for this is the solar energy that is coming from the sun, simple है, this is what we have just covered, ठीक है। एंड दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, वाटर इज बीइंग लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, और इसमें से ये सारा कुछ जो है ये इसमें से लूज हो रहा है। हमने आज क्या पढ़ना है, हमने अभी ये देखना है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कर लेते हैं। एंड इफ यू वांट टू स्टडी द अदर टॉपिक, आप मुझे बता सकते हैं, इसके बाद यू कैन स्टार्ट द टॉपिक आल्सो। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, we have already discussed this transpiration and its type. I have already told you lenticular transpiration है, stomatal transpiration है। बहरहाल we have a very good presentation over here, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएगी। Opening and closing of stomata, the topic that we were discussing, and factors affecting the rate of transpiration, ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। And it is not written very properly for you people in the text, so you better look at it in this presentation. Transpiration, what is it? It is defined as the evaporative loss of water from the aerial parts of the plant, और हम इसको कह सकते हैं the controlled evaporative loss of water from the aerial parts of the plant. इसमें you add a word over here, controlled, ठीक है। Transpiration is defined as the controlled evaporative loss of water from the aerial parts of the plants, ठीक है। There are three types of transpirations depending upon the route by which water is escaping from the plant. MCQ questions है, अगर from the general surface है, from the body of the plant, from the general surface of the plant है, so that is called cuticular transpiration, that is generally through the cuticle. It is known as cuticular transpiration. If it is through the lenticels क्या है, the loosely arranged cells, ठीक है, loosely arranged cells. Okay, the slide is not changing. Okay, let me see. Oh, एक मिनट बेटा, let me stop share and then let me go back to share again. When I will stop share and go back to share again, तो फिर हमारे पास जो है ना slide change हो जाएगी, ठीक है। Okay, when the slide is stuck, तो फिर मुझे आप लोग बता दिया करें। अभी आ गई slide आपको, 3 types of transpiration. Can you see the slide now? Okay, 3 types of transpiration. Okay, शुक्र है। Okay. अब यहाँ पर देखें, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, which is from the general surface of the plant है, lenticular transpiration through the lenticels है, and stomatal transpiration, okay, stomatal transpiration through the stomata, ठीक है। through the stomata हमारे पास ये loss of water transpiration क्या है, the controlled evaporation of water from the body of the plant, okay। चलें जी, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें एमसीक्यूज के लिए और आपके टू टेस्ट के लिए छोटी छोटी बातें हैं, and they are important. Evaporative loss of water through the cuticle of the leaf, or you can say the general surface of the plant. Young plants में से through the general surface भी there is loss, not only the leaf. 5 to 7% of the total transpiration that takes place through the plant is by the cuticular transpiration. At night, when the stomata are closed, cuticular transpiration takes place. The thinner the cuticle, the greater, spelling गलत है, सही कर लीजिए, is the rate of transpiration, ठीक है। The thinner the cuticle, the greater is the rate of transpiration, ठीक है। जितना यंग प्लांट है, जितना बारीक है क्यूटिकल, उतना ज्यादा वाटर का लॉस जो है, it is going to be easy. Now, this is the general structure of a bifacial leaf. This is the mesophyll. मेसोफिल में 2 पार्ट्स हैं, एक पैलिसेड मेसोफिल है और एक स्पॉन्जी मेसोफिल है. These are the guard cells which are mostly present on the lower surface of the plant, ठीक है, on the lower surface of the leaf, ताकि बहुत ज्यादा लॉस ना हो. These are the xylem and the phloem tissues which are present inside the midvein, and this is the cuticle. Loss of water through the cuticle is called cuticular transpiration. It is present on the upper side of the plant most of the time. Upper side of the leaf के ऊपर ये present होता है. This is the mesophyll tissue, in which we have 2 types of cells, the spongy mesophyll and the palisade mesophyll. दरमियान में this is the vein, and this is how the xylem vessels are arranged inside the vein. ठीक है, आगे चलते हैं. Lenticels. Lenticels are loosely arranged cells on the bark of woody stems.
They are aerating pores. Aerating pores का मतलब they have a lot of air spaces present inside them, found in the bark through which gaseous exchange can take place for the cells. ठीक है, ये आपके lenticels हैं, loosely arranged cells हैं. They appear as scars or protrusions on the barks, and they consist of, this is the structure of lenticels, consist of a loose mass of small, thin-walled cells, oval, spherical, irregular, having lots of intercellular spaces. ये बहुत important बात है. How are lenticels shaped? एक तो ये है कि they appear as scars or protrusions on woody stems. ठीक है, they consist of a loose mass of small thin-walled cells which are oval in shape. They might be spherical or they might be irregular in shape. ठीक है, and they have a lot of intercellular spaces. Loss of water through these intercellular spaces is known as lenticular transpiration. Evaporative loss of water through the lenticels on the stem of the stem, it accounts to about 1 to 2% of the total transpiration that takes place through the lenticels. ठीक है, water loss 1 to 2% है. Major water loss is through the stomata. This is on top of the epidermis. These are the guard cells that I was telling you. ठीक है, and ये देखिए inside the guard cells आपके पास chloroplast भी present है. About 90% of total evaporation that takes place is through the stomata, and it is known as stomatal transpiration. It consists of two bean-shaped guard cells. The shape can be different in different plants, but here basically, typically we discuss them as the green shape. This is the diagram of the guard cell. Short question में आ जाता है, ठीक है? And there is an inner pore present, which is called the stroma. The inner side of the guard cell, this side of the guard cell, it is having a thick wall, and the outer side is having a thin wall. That is why when water is absorbed into them, तो pressure की वजह से uneven opening होती है, and ये pore जो है, it gets exposed. Cellulose cell wall है, cytoplasm, no chlorophyll present in the epidermal cell, but inside the guard cell, yes, chlorophyll is going to be present. ठीक है, these are the epidermal cells जो कि surrounding cells हैं, and they are so different from the guard cells. Guard cell के अंदर देखें, when photosynthesis is taking place, this is the chloroplast. They absorb water, they open up, and they are said to be जो है rigid. ठीक है, उस वक्त हम उसको कहते हैं कि they are turgid. ठीक है, जब ओपन होते हैं तो इस तरह, और जब क्लोज होते हैं नाइट टाइम में, जब फ्लैसिड होते हैं, तो उस वक्त दिस इज हाउ दे क्लोज द पोर. वी आर गोइंग टू स्टडी द मैकेनिज्म of how the guard cell opens during the daytime and closes at night. क्या वजह होती है, और ये इस स्लाइड में बहुत अच्छा है. Stomata act as multi-sensory hydraulic valves. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Multi-sensory hydraulic valves, they are sensitive to water. ठीक है, the pressure of water जो है उसको ये sensitive है, and उसको ये control करते हैं water को. ठीक है, there are two hypotheses which can explain the opening and closing of stomata. Starch sugar hypothesis, which I have told you कि ये obsolete है, और influx of potassium ions, जो कि किसी हद तक जो है वो it is also a hypothesis, लेकिन ये है कि किसी हद तक इसको जो है ना वो accept किया जाता है. Starch sugar hypothesis बहुत आसान है, already explain कर दिया मैंने. Proposed by H. Van Moel, who was a German botanist. It states that in light, sugars are produced due to photosynthesis inside the guard cells, because guard cells के अंदर chloroplast होता है. And because of this sugar, mainly glucose होता है. Water potential down हो जाता है. Water potential का मतलब ये है concentration of water molecules lower हो जाता है, because solution बनना शुरू हो गया है. So the water starts to move into the guard cells, क्योंकि guard cell के अंदर solution concentrated हो गया है. फिर extra water move in होता है ताकि आपके पास tonicity बराबर हो जाए. ठीक है, they become turgid and they start to open up the pore. During the night, the sugars are converted to starch. और starch क्या है? Starch का क्योंकि osmotic potential नहीं है, तो क्या होता है कि water lose हो जाता है, और जब water lose हो जाता है तो वो cells अपने अंदर से पानी को guard cell, it starts to remove them. And when water starts to move out of the guard cells at night, because glucose has been converted into starch, they become flaccid. Glucose को कहते हैं कि जी, it is going to be active, it is going to attract water, it is going to, and this is osmotically inactive,
वाटर को शुगर स्टार्च जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता। स्टार्च इज प्रोड्यूस एट नाइट। जब स्टार्च बन जाता है, गार्ड सेल्स जो है वो वाटर को छोड़ देते हैं और द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द गार्ड सेल्स। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, the guard cells they attract water and then they make the glucose solution, and that concentrated glucose solution को dilute करने के लिए और पानी उसमें आता है, जिसकी वजह से वो turgid हो जाता है। लेकिन ये वाली hypothesis acceptable नहीं है, ठीक है। This is the one that is acceptable to some extent. This hypothesis states that in the presence of light, potassium ions are actively transported into the guard cells. It lowers the water potential in the guard cells. Water moves from the surrounding tissue into the cells, making them turgid, hence stomata open. क्या है कि in the presence of light, potassium ions are actively transported into the guard cells. ठीक है, potassium ions are actively transported into the guard cells, and when the potassium ion enters the guard cells, it lowers the water potential. यहाँ पर इन्होंने वो नहीं बताए हैं जो केमिकल्स बन रहे हैं, वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख के बताती हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम फिर क्या होता है, बिकॉज पोटेशियम आयंस आर मूविंग इन, water is going to move in, and because water is going to move in, these are going to become turgid. रात के टाइम में potassium ions are going to move out, water is going to move out. When water is going to move out, then these are going to become flaccid. Let me see कि इन्होंने इसको explain किया है या नहीं किया है, ठीक है। Influx of potassium ion hypothesis, closing of stomata. Passive diffusion of potassium ions from the guard cells takes place at night, followed by water removal. Guard cell become flaccid, hence leaving the pore closed. Factors that determine the opening and closing are the level of carbon dioxide in the leaf and in the light. ठीक है, ये देखिए कंट्रोल ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, ये बहुत अच्छी स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम, during the daytime, the guard cells take up potassium by active transport from the surrounding cells. They take up potassium by active transport from the surrounding cells, and when they take up potassium from the surrounding cells, what happens? This potassium, जो कि आपके पास यहाँ red dots में है, it starts to attract water. Guard cells के अंदर there is a substance which is known as malic acid. लिख लीजिए इसको, MALIC, मैलिक एसिड, मेलेट प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। मेलेट प्रेजेंट होता है, एंड मेलेट यहाँ पर क्या है कि ये आयनाइज करके मेलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, ठीक है। जब सुबह होती है तो एट दैट टाइम यू नो कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, ये चीजें लिखते जाइए, फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखें सुबह के टाइम में गार्ड सेल बंद है, तो प्लांट की टिश्यूज के अंदर अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया है। उस हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है थोड़ा सा जो है वो माहौल जो है वो वहां पर चेंज हो गया है। और सुबह के टाइम में फिर क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है गार्ड सेल्स में, जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है तो दैट हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इट स्टार्ट्स टू फॉल. And when it starts to fall, that change in carbon dioxide level, it starts to attract potassium from the surrounding cells. Potassium comes in, वहां पर आपके पास मिलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो पोटेशियम क्या करेगा, मिलेट आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो पोटेशियम मिलेट बन गया। पोटेशियम मिलेट क्या हो गया, पोटेशियम मिलेट जो है बेटा वो हमारा बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रांगली जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है। तो पोटेशियम मेलेट ने क्या करना है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट टू पुल इन अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू कीप ऑन हैपनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो है सराउंडिंग टिश्यूज में। Guard walls, because they are unevenly thickened and have radially oriented cellulose microfibrils, this causes the cells to bow as they become turgid and the stomata opens. अब रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होना शुरू हो गया, दोबारा से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। कैसे कि पोटेशियम मेलेट डिसोसिएट्स, पोटेशियम मूव्स आउट और मैलिक एसिड वापस बन जाएगा। व्हेन पोटेशियम मूव्स आउट, वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल अंदर ये खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई हो गई है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई हो गई है तो व्हाट इज गोइंग टू
happen, the high carbon dioxide concentration is going to support the efflux of potassium. Low concentration is going to support the influx. High concentration at night is going to support the efflux. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो गई, तो पोटेशियम ने ब्रेक डाउन होकर बाहर निकलना है, बिकॉज ऑफ विच ऑस्मोटिकली ये अब एक्टिव नहीं है, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये फ्लैसिड हो जाएंगे. ये वाली जो थ्योरी है, दिस इज मोर एक्सेप्टेबल एज कंपेयर टू द स्टार्च hypothesis. Factors affecting the rate of transpiration: light, temperature, carbon dioxide concentration, humidity, water vapor, wind, availability of soil water. ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आता है. ठीक है. लाइट, plants transpire more rapidly, आसान है, रीड कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद छुट्टी. In the light than in dark. This is largely because light stimulates the opening of the stomata. Light also speeds up transpiration by warming the leaf. ठीक है. लाइट की वजह से हीटअप भी हो रहा है, वार्म अप भी हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है. टेम्परेचर वही, जितनी गर्मी होगी उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट. ह्यूमिडिटी, व्हेन द सराउंडिंग एयर इज ड्राई, जितना ड्राई होगा उतना लॉस ऑफ वाटर होगा, जितना ह्यूमिड होगा एनवायरमेंट उतना लेस वाटर लॉस जो है that is going to take place. When a wind is present, when a breeze is present, the humid air is carried away and replaced by drier air, so loss of water जो है वो ज्यादा होगा. A plant cannot continue to transpire rapidly if its water loss is not made up by replacement from the soil. When absorption of water by the roots fails, ये important चीज है. ये गर्मियों में जो लिखते हैं ना कि why do young plants wilt during hot summers, उसका जो है ना यहाँ पर आएगा. When root fails to keep up the rate of transpiration, loss of turgor occurs and the stomata close. This immediately reduces the rate of transpiration. If the loss of turgor extends to the rest of the leaf in the stem, which takes place in young plants, the plants will wilt. बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है, उस वक्त स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन के रेट को कंट्रोल किया जाए. लेकिन in smaller plants, because they have cuticle, very thin cuticle present, तो cuticular transpiration की वजह से वो क्या होते हैं, उनमें से water loss होता है और उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है. ये यहाँ तक हमने रखा है. और अगर आप लोगों ने कल क्लास लेनी है तो मुझे बता दीजिए, कल फिर मैं आप लोगों को टाइम जो है वो कन्वे कर दूंगी. ठीक है, कि हमारा जो एक टॉपिक रह गया है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे. इफ यू वांट टू टेक द क्लास, अच्छा टाइम मैं बता दूंगी बेटा, और आई थिंक 3 बजे कर लें. इज 3 o'clock ओके फॉर ऑल ऑफ यू?